yesterday there was a reference about can the animals or do the animals also have a memory of their past life as a human being? And that was a very interesting thing. We left it at that. Actually, I'm speaking about it right now because I'm absolutely certain after Gopal's session, it would not be advisable to do such things. And we shall all go maybe in a very alpha kind of a mode, very relaxed mode. So just give me 5 minutes then. So we had talked about 26 lakh Yoni, and then I had some conversation with Rakesh. I talked also to Sakshi, and I did some work. And what I am going to talk for about maybe next 5 minutes is not essentially only about that, but lots of inputs that I got. So with your permission, I am going to share it for 5 minutes because there is a reason I am doing it and the link is there. So give me just 5 minutes, I shall speak, and of course Gopal will take. You've gone on mute, Arunji. I'm absolutely sorry. Yeah. So जब कल जो शाम को बात हुई थी उसके बाद मेरी बात हुई थी राकेश जी से, ऑफ कोर्स इन राइटिंग, साक्षी से काफी बात हुई। आज मैंने काफी लोगों से बात किया, कुछ पढ़ाई भी की। ये मैं इंटरव्यू इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि कल काफी इंटरेस्टिंग नोट पर हम लोगों ने एंड किया था। इंदु मैम ने भी कहा था और काफी लोग हम लोग सुनते आए हैं कि 86 लाख योनि से जन्म लेकर के हम लोगों का मनुष्य का जन्म होता है, ये हमने सबने सुना है। और बहुत पुण्य करने पर ये जन्म मिलता है। और थोड़ा सा रेफरेंस गोपाल जी और झा जी शायद मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसका ये था कि सेशन के अंत में साक्षी ने एक एग्जाम्पल दिया था शायद कि उसने किसी एनिमल से बात की, वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मनुष्य भी था। ये इसका रेफरेंस है। तो जो मैंने लोगों से बात की है उसका जो लब्बो-लुबाद ये है, पहली लाइन तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक पीढ़ी का जो अंधविश्वास है वो दूसरी पीढ़ी की मान्यता बन जाता है। ये पूरे विश्व में हुआ है, इतिहास में हुआ है। तो कई बार हम लोग मान्यता को अपना बेसिस ऑफ कन्विंसिंग आवरसेल्व्स और कन्विंसिंग अदर्स एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल कि मान्यताएं सभी गलत हैं, लेकिन इतना तो सच है कि 3-4 पीढ़ियों के बाद जो अंधविश्वास हैं वही मान्यता बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक बार और इंदु मैम से बात हो रही थी बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कि मैं ये बार बार क्यों कहता हूं कि झूठ जो है वो हम लोगों के जेनेटिक मेकअप में है। मैं तो कई बार I go to the extent of saying that apart from death, मृत्यु के अलावा जो एक ही सच है वो सच है झूठ। हम लोग की पैदाइश, हम लोग के जेनेटिक मेकअप में झूठ हम लोगों को इनसिक्योरिटी से बचाता है। ऋषि मुनि की बात करते हैं तो जो ऋषि संतान की उत्पत्ति के लिए संभोग करते थे या अपना वंश बढ़ाने के लिए, वृष्टवक्र ने किसी बार कहा भी था अपने पिता से कि जिस समय आप मुझसे संभोग कर रहे थे, जिस समय आप मेरी माता से संभोग कर रहे थे, उस पल में क्या आपने अपने पुत्र के बारे में सोचा था? इस पर भी वो काफी नाराज हो गए थे। फिर एक जन्मेजय ने कहा था कि ऋषि मुनि जो संभोग की बात करते हैं सिर्फ पुत्र की प्राप्ति के लिए, सच तो यह है कि जब नाविक की पुत्री पर उनका मन आता है और नाव में बैठ करके वो संभोग करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया था? पूरे विश्व को अंधेरा कर दिया था ताकि कोई उन लोगों को देखे नहीं। तो प्रकाश से वो अंधकार की ओर गए थे जब वो संभोग कर रहे थे। यह क्यों नहीं मान लिया जाए कि संभोग का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, उसका आरंभ ही झूठ से होता है। और प्रकृति में तो पशु पक्षी, पेड़ पौधे
सभी जो सत्य से अलग होकर के अपना रंग बदलते हैं, अपना रूप बदलते हैं ताकि उनको भोजन मिल जाए, ये हम सब जानते हैं। एक लाइन जो यहाँ पर जन्मेजय की आज मैंने पढ़ी, पहले भी कभी पढ़ा था लेकिन स्पष्ट रूप से आई, वो ये है, झूठ की सृष्टि करना भी कल्याण का ही एक रास्ता है। और उसको उन्होंने कल्याणकारी मिथ्या का नाम दिया था। वो मिथ्या जो कल्याणकारी हो, वो कई बार झूठ से अधिक, सच से अधिक कल्याणकारी होती है। ये दूसरा पॉइंट था, रेफरेंस बहुत साफ है कि हम लोग कई बार जिन मान्यताओं को मान लेते हैं, या तो वो अंधविश्वास से पैदा होते हैं, और जब हम लोग प्रोब करते हैं, तो जैसा मैं बार बार कहता हूं, कठोपनिषद का ज्ञान का तो मार्ग रास्ता ही तलवार की धार पर चलने के समान है। चल नहीं पाते हैं हम लोग, चमड़ी छिल जाती है। तो हम लोग तुरंत उधर से उतर करके अपने को संतोष, अपने को सुख करने के लिए पहले से क्रिएट किए गए झूठ का सहारा लेते हैं, या कई बार कल्याणकारी मिथ्या की सृष्टि करते हैं। अब मैं आता हूं कल की बात पर। इसका रेफरेंस ये देना जरूरी था क्योंकि मान्यता मैंने काफी सुनी, हमारी मान्यता है, ये हमारा ट्रूथ है। बिल्कुल मुझे उसमें कहीं पर कोई विरोध या ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं अपने आप से जब बात करता हूं, अपने स्टूडेंट से बात करता हूं, जिनसे मेरा बौद्धिक स्तर काफी मिलता है, उनसे बात करता हूं, तो मैं पूछता हूं कि क्या हमने जिन मान्यताओं को अपना लिया है उसको रैशनली प्रूव करके कंफर्म या वैलिडेट किया है क्या? तो कई बार ऐसा नहीं होता है। ऐसी ही दो मान्यताएं जो बिल्कुल काफी जोर प्रचलित है, जिन्हें सनातन धर्म का हिस्सा कहा जाता है, कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, तो उसका तो काफी प्रतिवाद फेसबुक पर या बाकी सोशल मीडिया पर आ भी गया है कि जिसे वो कोटि कहते हैं। कोटि का अर्थ सिर्फ करोड़ नहीं है, कोटि का एक और अर्थ प्रकार है, और तब साबित किया गया 33 प्रकार के देवता हैं, और उसमें गंधर्व देव सब आ गए। उससे जरा कठिन है 86 लाख योनि की बात करना, जो काफी होती है। 86 लाख योनि की बात सिर्फ एक पुराण में है, जिसे लोग कहते हैं कि वेद व्यास जी ने लिखा है। उसका नाम पद्म पुराण है, पद्म पुराण। जब मैंने कहा कि जिसे लोग कहते हैं वेद व्यास ने लिखा है, तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें भ्रांतियां तो हैं। महाभारत के बारे में भी यह कहा जाता है कि इतने लंबे अंतराल में लिखा गया है, 400-500 वर्षों में, एक व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा, जिस पद्म पुराण को कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने लिखा है, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। पद्म पुराण में 7 हिस्से हैं कम से कम। तो कम से कम मैं क्यों बोल रहा हूं भाई? तो बंगाल में जो है उसमें 7 हिस्से हैं, नॉर्थ ईस्ट में है उसमें 15 हिस्से हैं, गुजरात में है उसमें 5 हिस्से हैं, और जो उसका एक हिस्सा दक्षिण भारत में है उसमें 17 हिस्से हैं। तो लोग 5 को मान लेते हैं कि इसके 5 खंड है। तो मैं उस 5 खंडों की बात कर रहा हूं। पहले खंड का नाम है सृष्टि खंड, दूसरे का नाम है भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड, उत्तर खंड। इन 5 में भूमि खंड में वर्णन है कि जितनी प्रजातियां हैं, जिनमें जीव है, वहां पर वो हर पदार्थ में जीव है ऐसी बात नहीं हो रही है, जीव है। तो भूमि खंड में लिखा गया है कि 86 लाख योनियां इस पृथ्वी पर इस समय मौजूद है। वो योनि की बात हो रही है। तो थोड़ा बहुत जो मैं संस्कृत जानता हूं, उससे योनि की व्युत्पत्ति जो आती है, उसमें जो योनि का अर्थ है वह है उत्पत्ति। योनि का अर्थ उत्पत्ति। और इसी अर्थ में मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, गुरुजी के शिष्य ने मुझे बताया, उनका तो देहांत हो गया है, कि जब यहाँ हम लोग योनि की बात कर रहे हैं तो हम लोग जीव से पैदा हुए जीव की बात कर रहे हैं, योनि। तो इस मुताबिक 86 लाख उस समय योनियां थी,
तरह के जीव थे और उनका विवरण है जलज नव लक्षाणी, माने 9 लाख जल से पैदा हुए जीव, स्थावर लक्ष विशंति 20 लाख वृक्ष, कृमयो रुद्र संख्यक 11 लाख कृमियों माने कीड़े, पक्षिणाम 10 लक्षणम 10 लाख पक्षी, 30 लक्षाणी पशु 30 लाख पशु, चतुर्लक्षाणी मानव 4 लाख मानव, इसको जोड़ने पर 86 लाख होता है। तो आगे मुझे शायद बात करने की जरूरत नहीं है। तो जो पृथक पुराण में लिखा हुआ है वो उस समय जितने प्रकार के जीव थे उनका वर्णन है। उनके मुताबिक तो उस समय 4 लाख व्यक्ति थे। कहीं पर मैंने देखा, और मुझे बहुत कम जानकारी है, तो मैंने कम से कम 6 और 7 लोगों से आज पूछा है जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। शायद मेरा प्रेजुडिस हो सकता है और मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन जिसके रैशनैलिटी पर, जिनके उसमें एक सिद्धार्थ कृष्ण भी हैं कि जिनकी तर्क शक्ति पर और जो वो कह रहे हैं वो बहुत सारे स्रोतों से संपुष्टि करके कह रहे हैं। तो ये मेरी परिभाषा हुई जिनकी मैं इज्जत करता हूं। सबने ये कहा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति पाप करता है उसको पाप का फल भुगतने के लिए 86 लाख योनियों से आना पड़ता है। यह भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक योनि से दूसरे योनि में जीव जा सकता है। तो मुझे और कुछ नहीं कहना है, तो क्योंकि ये कल बात हुई थी और काफी इस पर काम हुआ, और फिर काफी प्रवचन एक शिवानी मैडम है ब्रह्म कुमारी की, वो भी कहते हैं, और काफी लोगों को मैंने सुना है कि मनुष्य जो पाप करता है उसका फल भोगने के लिए उसे मनुष्य की योनि में ही आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी जगह जाता है। लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आपसे ये सूचना शेयर करना चाह रहा था कि जिन 86 लाख योनियों की बात हो रही थी, वह बात है मुनि वेद व्यास के समय इस पृथ्वी पर कितने और कितने प्रकार के जीव थे। So I'm through with this. Now, of course, Gopal will take over. That was great, Arun Roy. That was really very interesting. Very interesting. Yeah. Okay, so Gopal, please take over. And I'm again repeating for the sake of being repetitive. This I could not have spoken after I would have heard Gopal, because I know what kind of a emotional or mental situation we are going to be after Gopal finishes. So Gopal, please take over from here. Indu ma'am, we shall take Thank you after Gopal. Okay. Yes, Gopal. So very interesting, but the only thing is पुराणों की बातें, मतलब मेरी अपनी जो ये है पुराण, basically I feel they are more of allegories rather than really scientific exposition or whatever. But anyway, so that's a different debate. पुराण का अर्थ ही में कथा है गोपाल। पुराण का मतलब ही एक कथा, कहानियां। वहां से सिंबल्स को हमको लेना है। इसलिए I totally agree with you. Sorry, I shouldn't be interjecting. पुराण का अर्थ ही है कहानी। बिल्कुल। और इसीलिए वो इतिहास खंड में आता है, जिसको हम बोलते हैं ऐसा प्रसिद्ध हुआ। तो इतिहास का लिटरल मीनिंग इज दिस इज हाउ इट इज नोन। बट एनीवे, सो एक्चुअली जब अरुण जी ने कहा कि आई विल हैव टू टेक दिस सेशन, इट वाज अ वेरी स्कैरी सिचुएशन फॉर मी, बिकॉज I thought that it was going to be more of experience sharing, but nevertheless, so my venture into Adhyatma spirituality does not come out of any existential crisis per se, or any suffering, etc. Or generally people say that I was going through a tough time, and then how
move towards the spirituality, adhyat, and all the stuff. In that sense, I feel I am more fortunate because I was born in a family which was already associated with an institution. Um, uh, एंड वो बचपन से ही एक संस्कार जैसा था कि अम, शुरू से ही हमने देखा कि ध्यान क्या है, अध्यात्म क्या है, और सारी चीज़ें. Although as one grows, one gains maturity and learns the nitty-gritties and the science and rationality behind spiritual discourse. But बचपन से हमने देखा था कि ध्यान ये होता है, ये आचार्य हैं, ये संत हैं, और all those stuff. And I had that natural inclination towards spiritual literature, whether it's philosophy or spiritual stories or spiritual texts, whether it's Bhagavad Gita or Upanishads or whatever. But I should say that my real so I started getting into this dhyan, etc. Because in our institution it was said that until you are at the age of 15 or 16, you should not really do dhyan because it may have some negative impact on your thought process and all those stuff. So in real sense, I started my dhyan, etc., from the age of 16, 17, and so on. And probably I realized the significance and the nitty gritty of spirituality somewhere when I started my engineering at IIT BHU. And therein, I came in contact with some people and also looked deeper into the literature which was there about Adhyat. And one of the seminal books that I still feel is one of a unique book in its own kind is Sadhana Ke Anubhav, which is written by the founder of the institution that I am part of. So, so I started getting into that, and uh, somewhere around I should say 2003, 2002 or 2003, I really started getting into that. जो हम कहते हैं कि ये अनुभव हुआ, अब ये अनुभव हुआ, और जो किताबों में, साधना के अनुभव में, या दूसरे भगवत गीता या सूफी लिटरेचर में जो होता है, उससे धीरे धीरे वो मैच करता था कि हाँ, ये अनुभव ऐसा है, ये अनुभव ऐसा है. And somewhere around 2007 or 2008, I really understood that what these koshas are, Manomay Kosh and Vigyanmay Kosh, and all those stuff, and how do one distinguishes the experiences associated with each of these kosh. So a brief about what the institution is. So the institution that I'm part of, and Arunji is also associated with that, is basically from Mathura, Ramashram Satsang Mathura, and it was founded by Dr. Chaturvud Sahai. Um, he founded this institution in 1931 formally, and he left his mortal body in somewhere in 1957. So this institution is already thriving a lot. So there are some, and his guru was Mahatma Ramchandra Ji Maharaj, who just his 150th birth anniversary just got celebrated, and Government of India has just issued a 100 rupee coin, 150 rupee coin in his memory. Uh, so there are some differences in the way. So Dr. Saab was actually a practicing doctor, and he had a lot of interest in spirituality. And uh, after his realization and enlightenment under Dr. Mahatma Ji Maharaj, he founded this satsang, as Mahatma Ji Maharaj said. So some of the key differences that what he realized was that till that time the sadhana used to be very complicated, in the sense that you have to do all these difficult steps involved, the Ashtanga Yoga or Hatha Yoga or whatever. And generally it used to be like, I mean, if somebody is going into that ascetic mode, probably that sadhana adhyatma is meant for those people. So he changed that, and basically uh, so normally, what we understand by Adhyatma is that it's a bottom to top approach, wherein we start from the bottom and gradually we evolve towards the
top experience. So what Mahatma Ji Maharaj had said is that he reversed this sequence, and he said that it is always better that one starts with the topmost thing, which is the Anandmay Kosh, and when one experiences the thing, and then when he descends that hill, it is much easier to realize what the valleys are, etc. And एक रस पैदा हो जाता है so that you can start ascending to that particular path. Otherwise, it's a very dry, as Arunji also said, it's a razor's edge. You never know where you are, whether you are in the right path or not. So what he did was he reversed this sequence and he said that first see what it is, and then gradually you try to achieve what you are trying to achieve through this sadhana. So, so in a way to describe this sadhana is very difficult because it's a combination of many things, whether you call it drashta yoga, call it samarpan yoga, sahaj yoga, or uh, karm, or a combination of karma, upasana, dhyan, etc. So it's all of these combined together in that sense. So so the basic three things about this sadhana are the three pillars are what we call dhyan, Chintan, and the other one is the Mansik Jap. So Guru Maharaj used to say that for easy and speedy Ishwar Darshan, the three things which are very important are Samadhi, Gyan Purvak, Jap, and Guru Prem. So that is where the importance of Guru is quite significant in this path. So so if I have to elaborate on these aspects of dhyan, chintan, and zikr khafi, because it follows some of the tenets of Naqshbandiya silsila. So and then you have the associated things of vyavhar parivartan, tawakkul, razi, and riza, etc. That I will just elaborate on that what it is. So looking at the dhyan, so if so technically we say dhyan is defined by Patanjali as uh, pratyaya ekatanta. So whatever we concentrate on, if that particular concentration is there for an extended period of time, that is called dhyan. So so through that dhyan, we try to reach that stage of samadhi, and that is one of the first and where is the Guru Maharaj used to say that unless and until we have this samadhi gyan purvak, Ishwar darshan bahut mushkil hai. So talking about this, I know it's very difficult to describe actually. So this is based on that Panch Koshi sadhana. So some of the messages that we were discussing in the group, we had also discussed around this. So in Tatiri Upanishad, the model which is described as Panch Koshi sadhana, wherein we say that the Atma or our self is surrounded by the five sheaths. So Annamay Kosh, Pranamay Kosh, Manomay Kosh, Vigyanmay Kosh, and Anandmay Kosh. So in true sense, adhyatma begins, the samadhi, etc., that we talk of, that basically begins from Vigyanmay Kosh. Annamay Kosh is where we are saying that if a desire is there, that something is there, so Annamay Kosh is transcended, then we move to Pranamay Kosh and so on. So samadhi, etc., that we speak of, they really start in the Manomay Kosh, and uh, getting into that Mandukya Upanishad of Jagrat, Swapna, Sushupti. So the three samadhis that we realize in Manomay Kosh. Manomay Kosh is basically made up of your mind, which is of Sankalp and Vikalp and that center. So Jagrat, Swapna, and Sushupti samadhis are where the Manomay Kosh gets into that. And so once we transcend this Manomay, and Manomay Kosh is basically the largest Kosh in all, and that is where a lot of practitioners they lose interest and
they struggle really, and they get distracted from this path of spirituality, adhyatma, and so on. So Jagrat Samadhi is when we get into dhyan, we find that because concentration is happening, so we start enjoying it because satoguni stuff is taking its control, and we start enjoying that. But very soon, because now the concentration is there, so पहले के जो संस्कार हैं, they start asserting themselves, and that is akin to what the stage is called swapna samadhi, and that is a very uncomfortable state to be in because we find that we have literally no control on what thoughts are coming into our mind and so on. And then once these thoughts and random thoughts etc uncomfortable thoughts they वो जब शिथिल हो जाते हैं तब हम सुषुप्ति समाधि में आते हैं. Then the real samadhis of adhyatma that we speak of they start. I mean, feel free to. I mean, if something I mean is I'm not clear, please just let me know, because this itself is very complicated in that sense. So as Patanjali says, so this is so yoga. He says that yoga is about the cessation of I mean chitta vritti, right? So chit is the location, the locus of chit is somewhere in the upper part of Manomaya Kosh. So we have, so antakaran, when we say man, chit, buddhi, and ahankar, correct? So other way of looking this at this is like sthul, sukshma, karan, and mahakaran, we say. So sthul is the gross body, which is our annamaya kosh, and the lower half of pranamaya kosh is the sthul. And upper part of pranamaya kosh and manomaya kosh is called the sukshma, and Vigyanmaya Kosh is Karan, and Anandmaya Kosh is said to be Mahakaran. So, lower part of Manomaya Kosh is the region of realm of your mind, which is Man. Upper part is Chit, and Buddhi's realm is the Vigyanmaya Kosh. And then we have the Ahankar, which is the realm of Anandmaya Kosh. So when this samadhi happens, so what happens is, so for yoga to happen, we say that chitta ki vritti ka nirodh hona chahiye. So chit is associated with first man. So that is where you have this jagrat, swapna, and sushupti samadhis, wherein because chit is a storehouse of all our sanskars. So when these sanskars get connected with the man of our manomaya kosh, then all these jagrat, swapna, and sushupti samadhis take place. And because it's a storehouse of sanskar of, as it is said, of previous births, of this birth or whatever. So just like if you are um, cleaning your room, so a lot of dust starts spreading, etc. So that is how also the chit starts throwing up a lot of dirt, and one starts feeling that, oh, I have lost the peace that I was enjoying in during my jagrat samadhi, and so on. And then when the dust settles, this is called the sushruti samadhi. So these three samadhis we experience when we get into the manomaya kosh. Before Manomaya Kosh, also there is one samadhi called Mood Samadhi, which actually in spiritual circles is not taken as to be really very important. But real samadhis that we spoke of, these start from the Manomaya Kosh. So as we go along this samadhi, we start getting into the stage where Manomaya Kosh ends, and we enter the realm of Buddhi, the intellect. And when this intellect starts interacting with Chit, that is where the real samadhis start, which are known as Sampragyat Samadhi and Asampragyat Samadhi. So Sampragyat Samadhi, as the name suggests, is Sam plus Pragya, so which is with Buddhi. Which the samadhi is there is called Sampragyat Samadhi, and without Buddhi, where the intellect also शिथिल हो जाता है, तो we call it Asampragyat Samadhi. So for Adhyatma, what we say is that in this life, all of us, our aim should be to reach at least the
Vijnanmaya stage. At least we should cross the Manomaya stage. Otherwise, so till Manomaya Kosh, all our personal efforts, etc., become valid. But as we go along into the Vijnanmaya Kosh, your personal efforts are of no use actually. So that is where what Patanjali says Ishwar Pranidhan takes over. So Ishwar Pranidhan, a lot of people have difficulty in terms of really accepting that there is an Ishwar, there is a God. So even if we don't accept the existence of God or whatever, Ishwar Pranidhan is like, I mean, so so if you look at consciousness, consciousness has two aspects, right? So one is when this consciousness is looking towards the outside world, it is called Chetna, consciousness, right? But when this consciousness is reversed and it becomes Pratyak Chetna, that is what we mean by Ishwar Pranidhan Shakti. So when this Pratyak Chetna moves inside and we start observing the action of this Pratyak Chetna inside, that is what the Drashta Yoga is. So even if you don't accept that there is a separate being as Ishwar or God, it doesn't matter. At least one realizes that there is some power or there's some energy which I really don't have control on. Every one of us experiences that I don't have any control on my heart, right? I don't have any control on my other bodily functions, but they work as for some energy or whatever. So when we take this consciousness inside, that is where we say that adhyatma starts, adhyatma begins. And when this pratyak chetna starts working inside our body, and we just let this pratyak chetna work on its own, that is where this manomaya kosh easily gets crossed, and we reach this stage of Vijnanmaya kosh. And then within Vijnanmaya Kosh, so Vijnanmaya Kosh, when we reach, as I said, the personal efforts don't matter. From Vijnanmaya Kosh onwards, the Pratyak Chetna takes over. And that is where the Samarpan or the surrender is very important. And as I say, surrender, nobody can actually commit this act of surrender. It is not possible. As long as you have that sense of ego and कर्तृत्व अभिमान जो बोलते हैं, वो जब तक है तब तक you cannot surrender. So surrender is a state. Basically, when you let this pratyak chetna start working inside you, a stage comes where the stage of surrender automatically is reached. And then this pratyak chetna, this surrender, so that is what Krishna also says in that famous slok that Siddharth Krishna ji also shared, that with that sarvadharman paritajya. So I don't look at that slok as Krishna as a personal god, but more as a definition of this pratyak chetna itself. So if you surrender yourself to this pratyak chetna, your kartitva, viman, etc. goes, and all these concept of pap and punya are associated with, as long as you have that sense of doer and sufferer. कर्ता भोक्ता का जब तक duality है, तब तक वो पाप पुण्य का भी concept है. So when you surrender yourself to this pratyak chetna, or if somebody is sagun upasak, then the Ishwar Pranidhan, then all these action, doer, and enjoyer, that concept of goes, and then the pap and punya concept also simply vanishes. It simply evaporates. So that is what is the Vijnanmaya Koshes, and that is where the dawn of Advait Gyan starts. So Advait Gyan is the realm of Advait Gyan is Vijnanmaya Kosh, basically, not the Manomaya Kosh. So that is why we say that Advait Gyan dawns when your intellect also subsides. जब वो शिथिल पड़ जाता है असम प्रज्ञात समाधि में, जब असम प्रज्ञात समाधि में जब हम जाते हैं, और deeper stage of asam pragyat samadhi, which is shunya and mahashunya, or what Sufis call fana and fana ul fana stage is reached, then this buddhi ka vyapar is also gone, and that is the dawn of Advait and uh,
that sense of आत्मा परमात्मा का एकात्मकता वगैरह जो हम बोलते हैं, that is the stage of विज्ञानमय कोश. But this is not the end. After this Shunya and Mahashunya is the stage of what Krishna says the Samatvam Yoga Uchyate, which is Sahaj Samadhi. So Sahaj Samadhi is the stage of that Sit Pragyata, or some literature talk about Dharma made Samadhi. So that is the stage which is of that Anandamay Kosh. So Anandamay Kosh is the stage where the pure ego, the pure aham जो हम बोलते हैं, not ahankar but pure aham, simple, that stage of that I, not I associated with any verb or something like that, that I exist, I do, not ahankar but aham, pure aham. That is the realm of Anandmay Kosh. So Vigyanmay Kosh and Anandmay Kosh, the stage is not within our control at all. It is the stage wherein just give me. Till Gopal comes back, it's a humble request that we go inside, and if you have some experiences to share, Gopal is come back. Please do speak about your experiences. Yeah. Gopal was So talking to everybody. I'll do that. Yes. So please continue, Gopal. Yeah. So as I said, so this was the period of 2007 2008, wherein I really started getting these experiences, and so जो दर्शन बोलते हैं वो basically we say that these are four types of darshan. We say I cannot claim that one has reached all the four stages. But during the monomaya stage, there is a darshan. So people who are deeper into samadhi, they would have experienced that the first darshan that happens is very flash kind of darshan. So if you are a sagun upasak, then you have that flash darshan of your idol on whom you are meditating. And if you are of Nirakar Upasak, then you experience that intense light kind of thing. But it is very temporary, and it is like, I mean, you are just dreaming. It's just in a flash, and it goes, that kind of stuff. Then the second samadhi which happens, which is what the chapter 11 of Bhagavad Gita is there, which is the Virat Roop Darshan. So Virat Roop Darshan may not happen as dramatically as Bhagavad Gita talks about, and this Virat Roop Darshan happens in the Vigyanmaya Kosh. And this is the darshan where actually you see that everywhere everything is engulfed by um, uh, sort of very bright silvery kind of light. I mean, everything is um, joined together in that sense. And um, for some I mean spiritual aspirant, this may last for quite some time. Even it may just last for months. For some people it may just last a day or a week. So it depends on what sanskar a spiritual aspirant has. So this Virat darshan I had when I was actually attending a religious function of our institution. Uh, and therein I had this same similar experience, wherein one experiences that there is a bright light wherein everything is conjoined together in a strange kind of I mean relationship. It's very difficult to really describe, but the kind of exhilaration, the kind of peace that you get to see, that is amazing. Actually, it's beyond experience. So that Virat Darshan
actually happens in the Vigyanmay Kosh, somewhere that where in the stage of some Pragyat Samadhi is there. So that is the second darshan, and the third darshan is wherein what they say Lord Krishna ka jo color hai, the dark blue. That kind of darshan you see, you feel when you get into that Anandamay Kosh, and um, it's a very strange kind of feeling. I am saying this because generally my sadhana is Prakash Marga sadhana. So that is why for the Sabd Margi sadhana, the experience is little different. So I'll just touch upon that also. So you find that it's a bright blue mixed with um, sort of bright silvery kind of combination, and it's just such a um, peaceful and such a brilliant experience that I mean it's really very difficult to put in words. So these are the primary three darshans that we so speak of, but there are also fourth darshan that people talk of, and which I think is of very advanced age. Um, that I don't have the experience of that. But these three darshans I have had experience in somewhere around 2007, 2008, till around 2016, to say in that period. And it happened a number of times. So that is why I don't consider that as a hallucination, because it is very easy to also get confused with these kind of things. Coming to the Shabd Marg, so people who are not familiar with these two paths. So basically, what happens is there are, as we say, that there are infinite paths to reach the same destination. Uh, but primarily, when one sees, there are two fundamental paths. I'm talking about this Manomaya Kosh Sadhana and beyond. I'm not talking about those pranayam, pranamaya kosh sadhana, wherein people do all those pranayam and breathing exercises and all those stuff. But I'm speaking of manomaya kosh sadhana, which is the realm of upasana, basically. So, so there is one path of Prakash, wherein if you are doing sadhana of Prakash, then you get these kind of feelings, experiences. But if you are the adherent to the Shabd mark, then you hear those ethereal sounds. So, as they say, you hear the Krishna Kabansi, or that sound of cicads, the sound of ocean going through. So these you experience as you go along, but based on your own sansar, your natural proclivity is towards either the light path or the sound path. So that is one of the experiences that I thought I'll share with you. Um, the other thing that we have had very long discussion on the definition of guru, and what guru should be, and so on. I was fortunate enough to be associated with this institution right from the birth, so I didn't have to really go through that struggle of identifying a guru and adhering to that. But what I am trying to share is that what I have read, or what I have heard from great people, that what a guru should be. So as Kabir Das used to say, that Pani pijiye chan, Guru kijiye jaan. So unless and until we are really sure that this is the person who can guide me towards the goal of my spirituality, one should just wait and watch. Um, so as I said, the first step towards identifying guru is that if you find yourself at peace, being tranquil, and that feeling of serenity in presence of a being, then that's an indication of a noble being. So that is the first criteria. The second criteria is, obviously, I mean, you should observe that person, whether there is an incongruence between what he does and what he talks. Because Shraddha, जो हम कहते हैं, Shraddha cannot happen right from the day one. And
Shraddha basically develops, and this Shraddha develops with the kind of association that you have with the concerned individual that you want to see as a guru. And as Shraddha develops, then the Nishtha develops. So this is um, a consequence that nobody can actually bypass. So Shraddha will only happen when you have spent some time with a person, known him, and you develop that feeling of attraction, love towards that individual. Then your Shraddha happens, and this Shraddha then basically matures into Nishtha, and then Nishtha matures into Samarpan kind of thing. So even when we look at guru are also of multiple types. So one definition is, we say that whoever teaches me something is a guru. That is true in the secular world. But in case of Adhyat, the definition of guru is different. The definition of guru, generally we say, we translate it as a one who dispels the darkness. That is quite true. But the real guru that we are talking of in the path of spirituality are of three types primarily. So one is called Guru, Sadguru, and Samarth Guru. So, or if I further extend it, so basically, first Guru is somebody um, who tells you something, that this is what this thing is. So Upadesha kind of thing is the first Guru, which is. But for this Guru to what happens is, if the shishya has some proclivity towards that subject, then he develops an interest, and this Upadeshak is able to guide that person to some extent. So this Guru is something called, what we call as Paras Guru, who is like, I mean, who can act only, or who can make a difference to only people who have certain tendency or certain proclivity towards a particular subject. So that is the Paras Guru. So he is the primary guru. So all these paragyan, the aparagyan guru that we talk of, all these teachers will fall into that. So Upadeshaks or Zahid that we talk in Urdu, these are all paras gurus, the first gurus. Second guru is the mantra guru. So there are some gurus who give you mantra, some कि ये मंत्र पे आप ध्यान करो, ये मंत्र पे ये करो. So these gurus are called Deepak gurus, which are primarily, if you have some sanskar already within you, so he just lights that, and that Deepak goes on. So this is the Deepak Guru. Third is the Chandan Guru. So this I am saying because this is how the gurus have been described in traditional scriptures. So that is what I am taking up. So Chandan Guru is something, when you associate with that individual, you also develop that fragrance that that particular guru has. So this is the Chandan Guru. But beyond that, uh, nothing happens to your transformation per se. So you become as fragrant as the guru that you are accompanying. Fourth and fifth guru are the gurus that we should be really interested in when we are into the spiritual path. So the fourth guru is called Bhringi Guru, and the fifth guru is the Samarth Guru. So Bhringi sadhana is which is described in Srimad Bhagavat as well, wherein it is said that uh, the kind of thought that you have, it makes that kind of individual. So Bhringi Guru is something that if I consistently, continuously think about that particular, उनका ही मैं चिंतन करता रहूं. And this chintan is not just superficial chintan, but chintan at all levels, which is at the stool, the gross body, at the sukshma body, and at the causal body. Then I also become like that particular guru. So it is called Bhringi Sadhan. So Srimad Bhagavat describes an insect which is captured by a predator insect, which captures that insect. And this insect, because of fear, it just keeps thinking about that predator insect, and one day comes when the captured insect becomes like a predator insect. So this is what the Bhringi sadhan is. But the danger in the Bhringi sadhan is that um,
unless and until you have a completely realized guru, you should not do this Bhringi sadhan, because there is a danger of capturing the negative aspects of the guru as well. And the last is the Samarth Guru, who is completely, I mean, he can not only transform you, but he can um, take you to any, I mean, any experience. He can not only transform you into the likeness of his own, but also he can leapfrog you to the real stuff. That is the Samarth Guru. So, so for spirituality, the critical piece is the Bhringi Guru and Samarth Guru. The rest three are not really the gurus that we should be striving for. Although, I mean, there are merits, because when we hear some certain individuals, certain gurus talk about something, it does change. I mean, result in some change in ourselves. But real difference which is made is by this Bhringi Guru and Samarth Guru. So. The last part, because I think we are already overshooting. The last part is the importance of jap in sadhana. It is very important, and the one jap that I have done, I have done and experienced its efficacy, is called Chaturmukhi jap, which probably I will share with you. Is basically when you um, so when you are doing all your dhyan, etc., so go into an isolated place, peaceful place, and imagine that. And this Chaturmukhi jap that I'm talking about, this is a mansik jap. This is not a jap that you have to spell with your mouth and orally kind of thing. It's a mansik jap. So Chaturmukhi jap is, I mean, what you have is this right shoulder, left shoulder, head, and then you have this heart section. So you pick up uh, uh, some mantra or some god's name. So the simpler it is, much better it is. So whether you pick up Om or Ram, or you pick up Hari Om Tat Sat, whatever. So you start with one breath, and in one breath you complete four cycles. One is like Om, 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 Om. So like this, you do 3 times. So Om, 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 Om. So in all, this is 12 times you are saying Om or Ram in one breath. So if you the advice is that if we are able to do this mansik jap on 400 breaths, that is the most ideal scenario. It leads to a lot of your antakaran ki safai. So as we say, we are not able to really realize our true self is because of all these sanskar sanchay in our chit, etc., those vasanas, etc. So this jap really helps to cleanse this antakaran thing, and speed up this entire sadhana, the adhyatma, dhyan, and samadhi, etc. And in addition to this, the associate 3 steps that I spoke of was the sadachar, that is akhlaq durusti in Urdu we say, and tawakkul and riza. Tawakkul is basically the state of santosh, that whatever God has uh, um, uh, given us. So I whatever is there, God has given us, I am content with that. And riza is what we call in Upanishad tav vidhan eva bhav, कि आपकी जो मर्जी है वही I accept it. So these are the other 3 associated practices along with the dhyan, chintan, and zikr khafi, or the mansik jap, which really makes a lot of difference, and I have experienced these 3. So I don't know whether I have just confused you, but in this short time, I tried to capture a lot of these things. So I mean, if anybody wants to share or thoughts, I'm really thankful to you for being patient. Indu ma'am had a question and Sarita ma'am had just raised the hands.
just go ahead. I mean, today I would like to not be modulating this. Anybody who wants to speak, only do not interfere with the other ones. So, Sarita ma'am, you start, then Indu ma'am can take over from there. Yeah, I mean, it was very complex, tell you the truth. And also, I have not done any of this. So for me, it is like a my level is like a first step. But the sequence you said about Om part, is there any particular sequence you do, or you just go surrounded? So you start with the right shoulder, left shoulder, Okay. your head. That's Sastrar, crown of your head, and then you go towards that where your skeletons meet, the center here, Like a at the end of, the sternum yeah, bone okay. where it is. Yeah. So you say Om, 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 and with force you release your breath at the 12th round. So this is like After, Om, okay. Om, Om, So Om, you Om, Om, Om. So you don't point like this. You just close your eyes and imagine that you are saying I Om on this imagine. right shoulder, then left, then this Om and this Om, and when the last Om comes, which is the 12th count, then you release Mhm. your breath with force. So Okay. Om, Okay. Om, 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 like this. So Okay. Guru Maharaj also has written in Sadhana Kanvo that this is a very powerful technique, and even Mahatma Ji Maharaj in his book Kamal Insani has written very I mean good words about this Chaturmukhi Jap. Okay. Okay. I mean, so it depends on whatever. So if you are a Sagun Upasak, you can pick up Ram, Sham. But the thing is, it should be a simple word. You should not get convoluted in the word itself. So somebody say, Yeah. okay, Hari Om Tat Sat. That is also fine. Point is that it just develops your concentration and helps to cleanse your Mhm. chest. That's it. Mhm. Mhm. Thank Indu you. ma'am. Indu ma'am, can you hear me? Hindu Please go ma'am. ahead. जी जी सर सर जो क्वेश्चन मैंने पहले पूछना था वो तो खो गया क्योंकि गोपाल जी का बहुत ही सुंदर एक लेक्चर भी नहीं कह सकती, एक पर्सनल एक्सपीरियंशियल लेवल पे जो आपने शेयर किया, बहुत ही सुंदर। वैसे ये जो टेक्निकलिटीज हैं, जो भी इंसान इस लिटरेचर को पढ़ता है, उसको याद, चाहे जैसे मैं अगर आपकी तरह बोलना चाहूँ तो शायद मैं ना बोल पाऊँ, लेकिन जैसे आप बोल रहे थे तो आई कुड रिलेट to all the terms and to all the things that were being said by you. And but सबसे बड़ी बात शाब्दिक ज्ञान के साथ तो सिर्फ होना तो काफी नहीं है। आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। आप बहुत फॉर्चुनेट हैं गोपाल जी कि आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो आपको इस फैमिली में लेके आए, जहां से आपने बचपन से ये सब देखा। मेरा ख्याल है कि ये भी एक प्रभु की बहुत बड़ी कृपा अपने आप में होती है, क्योंकि अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं तो शायद कोई 5-6 साल से तकरीबन मैं इस तरफ मेरा रुझान हुआ है। उससे पहले मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत सारी ऐसी चीजों में मजा आता था, लेकिन कभी ऐसी कोशिश नहीं कभी हुई कि मैं इनको कंसर्टेड एफर्ट के साथ पढ़ूं। इसीलिए मैंने एक कॉन्वर्सेशन में ये कहा था, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि लिटरेचर ने मुझे इस तरफ पुश किया है। मैं ये समझती हूँ ऐसा। मेरी लाइफ स्टोरी किसी दिन फिर बात करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लिटरेचर ने इस तरफ पुश किया, बिकॉज आई वॉज नॉट रियली
And even still, I don't have a guru, honestly speaking. Guru in the human form. मैं एक बात जरूर शेयर कर सकती हूँ, मैंने जरा सा जिक्र किया था उस दिन कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से तलाश कर रही थी, तलाश ही कर रही थी कि मुझे, क्योंकि मैं सब जगह सुन रही थी कि गुरु बहुत जरूरी हैं, तो मैं बहुत परेशान, अब रोया करती थी मैं अपने पूजा रूम में बैठ के कि मुझे गुरु क्यों नहीं मिलते हैं। तो फिर अचानक मेरे सामने ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र जो है, और दक्षिणामूर्ति का की डिस्क्रिप्शन, और दक्षिणामूर्ति का बहुत सारा लिटरेचर मेरे सामने आना शुरू हुआ। और फिर मुझे ये समझ आया कि जैसे जैसे मैंने पढ़ा, तो उसमें मुझे ये समझ आया कि जिन जिन लोगों के पास ह्यूमन गुरु नहीं है, तो दे कैन शिवा एज गुरु, दे कैन अडॉप्ट शिवा एज गुरु। तो उसमें मैं दक्षिणामूर्ति जो हैं उनको मैं अपना गुरु समझ के उनमें मैं उनको, और मतलब सच सच जानिए कि मैं जो कुछ चाहती हूँ ऑन ऑन द स्पिरिचुअल प्लेन, ऑन द स्पिरिचुअल प्लेन, दूसरा मैंने कभी कोशिश नहीं करी। तो ऑन द स्पिरिचुअल प्लेन मैं जो कुछ चाहती हूँ, मुझे उसका जवाब मिल जाता है। मैंने उस दिन बात भी की थी दीपांकर जी से इसके रिलेटेड। तो सो मैंने एज अ गुरु अपने मैं ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज देखिए, हम इस ग्रुप में प्रोबेबली गोपाल जी, मैंने अभी तक जिन लोगों को सुना है, मुझे लगता है आप यू मस्ट बी एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, क्योंकि आपने तो समाधि की स्टेजेस को एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, दोज हु आर स्टार्टिंग और दोज हु आर इंटरेस्टेड, और दोज हु आर दे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, मेरी तरह जो लोग। तो मेरे कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हमको ह्यूमन गुरु के लिए इधर उधर भटकना चाहिए। मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर, और बहुत बड़ी बात होती है, आई बीइंग अ फीमेल, तो जब तक पूरी फैमिली आपकी उस तरफ इंक्लाइंड ना हो, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने लेवल पे किसी एक गुरु को, क्योंकि हम, आई डोंट नो, आई मीन आई कांट डिसाइड ऑन दैट। तो मुझे लगता है कि दक्षिणामूर्ति हैज रियली सर्व्ड, जो मैं चाहती हूँ किसी गुरु से, वो मुझे जवाब मिलते हैं उनसे। तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र भी है, आप अगर आप बिल्कुल में सही से कह रहे कोई, हाँ जी। तो हैं। आप तो बिल्कुल सही मैंने कह रहे हैं। जी जी, तो ये हम एक मेरी ऑब्जर्वेशन है आपकी टॉक को लेके, बिकॉज ये फॉर्च्यून तो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है कि आपको क्रेडल से ये सब कुछ मिल जाए। तो नहीं आता है, तो और जिस भी स्टेज पे आता है, मुझे लगता है कि जिस भी स्टेज पे आता है, हमारे कर्मों के मुताबिक वो सही है, वो सही ही होगा। तो मैं उस चीज में, हाँ, लेकिन मुझे ये सब लगता है कि आपने एक वर्ड शायद मिस किया, लेकिन आप जरूर उसको जानते होंगे, भाव। मेरे को लगता है कि बिल्कुल आप बिल्कुल हमारे हमारे पास जो भी कुछ मिसिंग है, अगर हम वो भाव से चाहें तो पूरा कर सकते हैं। आप भाव से ईश्वर को पुकारिए, एब्सोल्युटली। आप भाव से प्रभु का नाम लीजिए, आप भाव से उनको, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो सशरीर गुरु और अशरीर गुरु वाली जो बात कही आपने, वो बिल्कुल सही कही। और एक्चुअली में देखा जाए तो मैं गुरु महाराज का जो ध्यान करता हूँ, मैंने भी गुरु महाराज को देखा नहीं है। गुरु महाराज ने तो 1957 में ही पर्दा कर लिया था।
तो जो सशरीर गुरु होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उससे मदद जरूर मिलती है। जब अगर सशरीर हो और वो समर्थ गुरु हो तो बहुत मदद मिलती है। हालांकि इस पथ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है, कृष्ण को अपना इष्ट बना के, या राम जी को इष्ट बना के, या किसी और गुरु को, जैसे आपने दक्षिणामूर्ति जी के लिए कहा। तो वो जी बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वो बिल्कुल सशरीर हो, लेकिन वो गुरु ऐसा समर्थ गुरु होना चाहिए जो कारण और महाकारण के स्टेज तक पहुंचा हुआ हो। तभी जो आप गो, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की बात कर रहे हैं जी वो जी संभव है। सो गोपाल जी, मैं एक और छोटी सी बात इसमें आपको शेयर करना चाहती हूँ। आपने दो चीज की बात करी। आपने एक तो शब्द मार्ग की बात करी, और एक आपने जी, अम, अ, प्रकाश दूसरा प्रकाश जी प्रकाश मार्ग प्रकाश की, मार्ग। या प्रकाश मार्ग की बात। जी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, बहुत पहले तकरीबन 1994 के करीब, जब हम कुछ फ्रेंड्स ने इन चीजों पे ध्यान करना शुरू किया, तो अच्छा हम लोगों को कुछ एक्सपीरियंस जरूर हुए। हालांकि वो मुझे लगता है बहुत प्रिलिमिनरी हम्म। थे। मुझे अपना याद है, मतलब वो मेरे को हम्म। स्मेल के साथ एक्सपीरियंस हुआ। हाँ मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को वो फ्रेग्रेंस जो है, उसके बाद किसी भी चीज की फ्रेग्रेंस मैंने वैसी नहीं महसूस की। जो वो कुछ एक हफ्ता 10 दिन के लिए, वो दैट फ्रेग्रेंस स्टेड विद मी। सो मतलब आपने ये जो दो बात करी, मैं एक तीसरा एंगल बता रही हूँ कि ये स्मेल वाला, सुगंधी वाला मार्ग भी हो सकता है उसमें। तो क्योंकि हमें मुझे उस वो वक्त इस बात। वो पतंजलि जी ने भी वो बताया है, पतंजलि जी ने भी वो लिखा है पतंजलि योग दर्शन में, सुगंध। जी बट वो मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है कि प्रकाश और ध्वनि में क्या होता है कि ये सृष्टि के मूल से, जो कहते हैं कि दो चीजें जो हैं, कि जो हम बोलते हैं कि लेट देयर बी लाइट एंड सृष्टि वाज क्रिएटेड, या अपने सनातन धर्म में हम कहते हैं कि नाद से सृष्टि की रचना हुई। इसलिए प्राइमरी दो जो हैं वो नाद और प्रकाश और शब्द मार्ग कहते हैं। सुगंध वाले में क्या है, उसमें क्या है कि अल्टीमेटली ये तो जो 5 तन मात्रा ही है ना, वो शब्द रूप स्पर्श वाली जो बातें हैं। तो जब कभी कभार क्या होता है, जब हम थोड़ी एकाग्रता हासिल करते हैं, तो इसमें से वी बिकम एक्स्ट्रा सेंसिटिव टुवर्ड्स वन ऑफ दीज तन मात्रा, एंड दैट इज वेयर यू एक्सपीरियंस दैट दिव्य स्मेल का। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो इनिशियली दोज हु आर ट्राइंग टू वॉक द पाथ, उनके लिए छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो हैं, कि आपने, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि शुरू शुरू में मैं बस में अपने कॉलेज जाया करती थी। और उन दिनों में मुझे इस वक्त भूल गया कि क्या क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा था। तो I was just standing waiting for the bus, and a stranger came and stood next to me. And I don't know why he started talking to me. And somehow, वो जो क्वेश्चन था, वो बंदा वो क्वेश्चन का जवाब, मतलब बात करते करते वहीं पे बात आई। वो मेरे को उसका जवाब दे के वो मुझे पता भी नहीं कहाँ चला गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जब हम इस रास्ते पे जब चलते हैं, तो ये शायद समाधि तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भी जो हैं, वो एक तरह का प्रूफ होती हैं दैट वी आर ऑन द राइट पाथ। और मैं करेक्ट करेक्ट, सच जो बता रही सेंस हूँ ऑफ एक कृपा बात, और ग्रेस जो वो कह एक रहे हैं। एक मैं लास्ट बात बताने वाली हूँ कि इस ग्रुप के फॉर्म होने से पहले
मैंने एक दो लोगों से बात की, मेरा ख्याल मैंने अरुण सर से भी ये बात की है उस वक्त, कि अब इस अध्यात्म के बारे में बात करने को भी नहीं मुझे कोई, मतलब यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ में ये सब चीजें डिस्कस कर सकूं. एंड लुक एट दिस, लुक एट दिस, यू नो, आई एम डिस्कसिंग इट इन अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी जो चीजें आपके सामने आती हैं तो विश्वास तो बनता है, श्रद्धा कहें, विश्वास कहीं बनता चला जाता है. थैंक यू सो मच गोपाल जी, बहुत ही सुंदर जी, था. थैंक यू सो मच अरुण सर, एंड थैंक यू एवरीबॉडी. Thank you, ma'am, for a beautiful introduction. Somebody else? Somebody else? We have formed a group, except Jhaji, perhaps. Everybody in the group. It's a parallel group called Learning Together Continued, which specifically we have ensured that we only talk about, I would not call Adhatma, but related things. And we have decided to continue in that. So others are welcome to join. Three things I will add here, because the main purpose of this session, particularly today, which Gopal fulfilled more than I expected, was to initiate some of us, those who are not exactly in the path. And to that, Gopal and Sarita ma'am exchanged about chanting silently or otherwise. Sarita ma'am or others, the simplest out of 8 processes I tried came from 2 sources. Sri Ram, whose book perhaps Sarita ma'am is reading nowadays, and one another. Now, Om. Some of them say, I'm not very sure whether it is a right explanation or not, but I find it very acceptable to me. They say Om, O is the first word, O is the 8th letter, not word, sorry, letter. O is the 8th letter, Ma, Ka, Kha, Ga, Gha, Nga. Ma 25वां अक्षर है, तो रेशियो है 1, 8, 25. तो लोग बोलते हैं अ से आप शुरू कीजिए, एकदम सिंपल, और ऊपर की ओर जाइए. तो अ कहां से शुरू होगा? तो नाभि से. तो कल्पना कीजिए अ की आवाज या जोर से बोलते हैं तो नाभि से निकालिए, मन में बोल रहे हैं तो कल्पना कीजिए अ नाभि का स्रोत है. अगर वहां आप 1 सेकेंड के लिए रखते हैं तो 8 सेकेंड के लिए ओ शुड बी हृदय के पास. मतलब 1 काउंट नाभि पर, 8 काउंट ओ की छाती पर, और 25 काउंट सर के ऊपर. शुरू में 1, 8, 25 करीब 34 हो गया. वो संभव नहीं होता है अगर, तो रेशियो वही रखिए, ड्यूरेशन कम कर दीजिए. I found that to be the most effective and simplest way of pronouncing Om or Om. I'm just trying. Oh. That's all. Number 2, whether it is Sri Ram or almost all the 8 forms of Dhyan Upasana I tried, everybody says there has to be certain physical activity before you start Dhyan. And all of us, I mean, your body should get loosened up, your joints should be loosened up. अगर बिल्कुल संभव नहीं है तो ध्यान करने के पहले जो श्री राम, तो उनका पूरा 1 घंटा उसी पर ध्यान है, सांस पर. तो हम सब लोग जानते हैं कि कल्पना कीजिए सांस आपके नाक से अंदर जा रही है, देखिए उसको, जैसे वॉचिंग द ब्रेथ. आंख बंद के भी देख सकते हैं, खोल के भी देख सकते हैं. ये तो 2-3 मिनट में मैं अपने स्टूडेंट्स को कराता था. इतना पावरफुल टेक्निक है वॉचिंग द ब्रेथ. वॉच इट, through the nostrils, doing it,
and watch it coming out. Absolutely easy breath. No stress, no efforts, no counting, no nothing. So you can try, just close the eyes and just imagine. It will not be very easy because you won't even feel what is going out. मेरे केस में जब पहली बार मैंने किया तो 5 मिनट के बाद मुझे नॉस्ट्रिल्स में वो फीलिंग आई थी. शायद आपको जल्दी आए या देर से आए, करते रहिए कि मैं सांस को फील कर रहा हूँ, उसका वॉल्यूम, उसकी ठंड, उसकी शीतलता या गर्मी, और जब जा रही है तभी भी मैं उसको फील कर रहा हूँ. टू स्टार्ट विथ वी कैन डू करीब जितने एक्सेप्ट वन, एवरीबडी advises certain amount of physical activity. This one I find very simple. तीसरी बात जो परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि स्कूल में वो ध्यान सिखाते हैं और उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ. बाकी 4-5 में रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ. वो क्या करते हैं, या लाहिरी भाषा के ट्रेडिशन में जो लोग करते हैं, आजकल श्री एम एक गुरु है, नाम सुना होगा, वो भी वही फॉलो करते हैं. वो लोग क्या कहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी की बात वो करते हैं, कुछ आसन बताते हैं, लेकिन अगर वो कोई न भी कर पाए तो वो कहते हैं अपनी सांस को देखिए और बॉटम ऑफ द स्पाइन, वहां से कल्पना कीजिए प्रकाश ऊपर जा रहा है, एक सांस में यहां पहुंचना चाहिए. अगर रोक सके तो ठीक हो जाता है. जीभ को पीछे की ओर ले जाइए और देखिए जब तक आपने रोका है वो सांस आपके मस्तिष्क में सब तरफ फैल रहा है, और जब छोड़ते हैं तो मस्तिष्क से उसको नीचे लाते हुए बॉटम ऑफ द स्पाइन पर ले जाइए. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मगर बहुत डिफिकल्ट नहीं है. तो आई रिपीट, if one is not able to indulge in certain asanas or physical exercises, one can start with number 1, watching the breath. Do as long as possible. If the mind becomes quiet, then you can use either one of them. 1, 8, 25, Om. Om. Or if you become more proficient, start breathing from the bottom of the spine, take it to the head. It will take around 2 or 3 seconds, or maybe 1 second. If you are able to take the tongue back, okay. Otherwise, just imagine that during holding of the breath is spreading around your cerebrum or upper part of the head, and while going down, it's going down back to the bottom of your spine. These anybody can start. If you are doing something else, of course keep on doing, but since we had promised that we shall talk also about some initiations, so I thought I might share it. Number 2, all of us know, क्लीनिंग की बात तो गोपाल ने की. अरे बिना क्लीनिंग के कुछ पॉसिबल नहीं है. हम लोग अपने को भले कितना भी खुश कर ले, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, वो क्लीनिंग का जो एफर्ट है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है. सबसे सटीक बात एक और जो गोपाल ने कही कि जब आप शुरू करते हैं घर की सफाई करना, तो पहले क्या आता है, धूल उड़ती है. उसी धूल को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सब छोड़ देते हैं. तो धूल की सफाई तो के बिना होने वाला नहीं है. उसके बाद ही फिर वो आवाज या प्रकाश, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने जो महसूस किया पिछले 23-24 वर्षों में कि जो शुरुआत मेरी हुई थी 98 से, इन 3 चीजों ने मेरी बहुत मदद की. शब्द ओम, कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, और उसको प्रॉपर तो शब्द अच्छा नहीं है. मैंने जो दोनों प्रैक्टिस किया मुझे बहुत मदद मिली. 1, 8, 25 वाला, और फिर कभी कभी अगर मैं 1, 8, 25 नहीं कर पा रहा हूँ, जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ वहां घूम रहा हूँ, बाथरूम में हूँ, तब कोशिश करता हूँ कि बॉटम ऑफ द स्पाइन से सांस लूं, ट्रेन में थोड़ा वो स्प्रेड करे, और गोइंग आउट अगेन फ्रॉम द बॉटम. दिस स्टार्ट्स
as Gopal very rightly said, it starts with first of all quietening your mind. Let us start from there, those who are in the process to start. I have nothing to add for the time being. Anybody else can take it. Yes, so what you said, I'm so surprised. I have an app, and they exactly said that, yeah, this is an, and I thought where they come from, where they have, like, कहाँ से उन लोग को ये सब पता चल गया है. और असल में उस ऐप में यही सब बात, जो ब्रीदिंग के बारे में आपने कहा कि एक नॉस्ट्रिल से आ रहा है, वो उसको दे सेड यू फील द वार्मथ, यू फील द फ्लो, and you feel the resistance कि कैसे जा रहा है, and you will actually ultimately you will start realizing that this is actually happening. जो breath को तो हम लोग एकदम लेते हैं कि पता भी नहीं है कि कब सांस ले रहे हैं, but slowly you will realize that actually, yeah, it is helping you quieten the mind. And the spine one and the Om one you said, they did not say ratio, but they said start with Navi and then go up. And so this is an app. I'm so surprised that they took all these things and made an app out of it. This is Somebody else has to And add something? mindful breathing is part of the Vipassana this meditation as well. So mindful breathing is in itself a very powerful technique. One उसके thing I would अलावा like to share, जैसे Gopal, please continue. Please continue. I mean, I and Gopal belong to the I mean, same oh, tradition of Dhyan. just Gopal, please one continue. one word, that one sentence है. So विज्ञान भैरव में जो 112 meditations भी बता रखे हैं, लेकिन वो क्या है, हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम बहुत सारी चीजों में उलझने लगे हैं. सो वी शुड अवॉइड दैट. आई थिंक कोई भी एक पकड़ लें उसको पूरी निष्ठा के साथ. तो जो एक पतंजलि योग में जो कहते हैं कि दीर्घकाल नैरंतर्य और सरकार सत्कार आसेवित, इससे ही आपकी मतलब दृढ़ भूमि तैयार होती है कि लंबे समय तक होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए और श्रद्धा के साथ होनी चाहिए. बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर मी. So it will really make so whatever suits our temperament, let's pick up that and stick with that for a long time. नहीं, वो बोलने का गोपाल कारण था कि मैंने भी ध्यान शुरू किया था 1998 में, 92 में विद द सेम. मुझे लगा ध्यान करने में 2-3 मिनट में मेरा ध्यान भटकता है, शायद 1 मिनट में भी नहीं भटक जाता होगा. तो फिर मैंने अपने आप से पूछा, इसका ये तो कारण है, इसका निवारण क्या है? तो निवारण जब मैंने ढूंढना शुरू किया तब मुझे ये सब मालूम पड़ा कि कुछ शरीर और मन को स्थिर करना तो जरूरी है, उसके बाद ध्यान और अच्छा होता है. तब फिर मैंने शुरू किया मन को स्थिर करने के लिए, ताकि ध्यान लंबा हो. तब तो खैर लंबा भगवान की मर्जी से हो जाता है, काफी लंबा. और क्योंकि दूसरा है शेयर करने की बात ही, तो तुम्हारे अलावा मैंने अवधेश को भी कहा था, अनुराग को भी कहा था, ताकि हमारे जो मित्र लोग हैं उनमें से इनमें से किसी एक को चुन लें या कोई और चुन लें, क्योंकि चुन करके प्रैक्टिस करना तो पहली सीढ़ी है यार. बिल्कुल करना तो पहली सीढ़ी है. तो क्या करना है? तो आज का सेशन हमारा उसी लिए था, हम लोग कहाँ से कम एक पहला कदम तो ले सकते हैं. एंड सो एक चीज हम आप बताना चाह रहे थे. तो अभी एक एक्सपेरिमेंट एक्चुअली चल रहा है, हार्वर्ड का है और काफी और भी इंस्टीट्यूट सब में है. और उसमें उनका एक्सपेरिमेंट था कि पेयर वो लोग किए और 2 पर्सन को MRI मशीन में डाले, एंड दे हैव दिस फंक्शनल MRI, और दोनों का ब्रेन वेव कैप्चर, आई मीन MRI फंक्शनल MRI कैप्चर किए while they were talking about the same story. They were exchanging their story. तो कैसे ह्यूमन ब्रेन सिंक्रोनाइज करता है if 2 person are actually connected in the sense they are talking about the same frequency. So दोनों का न्यूरॉन एक ही साथ फायर कर रहा था और लाइट अप कर रहा था एरिया एक ही जगह पे. ये एक्चुअली मेडिसिन में चल रहा है ये एक्सपेरिमेंट. सो
there is a question कि आप जब ध्यान करते हैं, अकेले करते हैं या बहुत लोग साथ में एक बार करते हैं, how that affects the entire environment. That's why alone versus multiple people, why we बहुत सारे रिलीजन, मोस्ट ऑफ द रिलीजन में एक साथ बैठ के काम करते हैं, तो हम सोचते हैं क्या आखिर इसका पर्पस क्या होना चाहिए. तो एक्चुअली दैट इज द पर्पस. यू ऑल कम बिकम टू गो ऑन वन फ्रीक्वेंसी एंड देन मेडिटेट और व्हाटएवर यू आर डूइंग, it has a meaning to it. So finally, if someone is getting to the science part of it, that No, science was there long time back, only we did not have the terminologies. Because what is science? If the effectiveness is there, that is science. yes, We did not. modern, I should say modern science, now they are giving a name, like brain. Name, terminology. Yes, medical science, I should say, not the science part, but medical science is coming to also in touch with the adhyatma and spirituality part, how that actually affects human. So before we close the session, since other than Haji, everybody is there, so why don't we start practicing? Ma'am. Indu ma'am, just a second. So why don't we start practicing maybe of our own, and maybe we can practice on the video also together. It is all how we decide. Let's start practicing and sharing. How do you respond to it, Dipankar, Rakesh? I'm all for it, Arunji. Rakesh, are you there? Yeah. I am all for it. Absolutely. I have Only my time commitment Mhm. becomes a bit of a challenge. No, I have to very juggle a well few things, but yes, I mean, yes. I mean, maybe on a Saturday or a Sunday, and when it's a matter of those who can join. Yes. Those who can join. Yes, We just yes. practice together. We practice together. So I will. I have also talked to. I have not talked to him. I have sent a message to Siddharth, and he said he would be very, very happy to maybe make some initiations or speak about it. So till he comes, at least we can start sharing our experiences with breathing and some dhyan process which anybody is following. And have you ever had experience of all these, like the alpha frequency and beta frequency? Yeah, a lot of it. frequency? I worked for about 3 years with a person associated with AIMS. He was doing MS in physiology. And there's a person from BARC, so we used to have lots of measurements of these things. The answer is yes. So I can share the experimental results also, but I think right now is not the time. Indu ma'am, you are... No, I'm not talking about EEG part. I'm not talking about, I'm talking No. about the sound frequency part. Yeah, we shall talk about it because already we are running out of time. Indu ma'am, you are saying something? No, ma'am, nothing much. Just an observation for Ma'am Sarita. Ma'am, सत्संग का इसीलिए बहुत महात्मा है हमारे. तो सत्संग serves the same purpose. Mm-hmm. Yeah. Why doesn't Dr. Jha conclude the session? He's excellent in concluding sessions. Dr. Jhaji, all yours. You have not spoken anything perhaps. So please conclude the session. Dr. Raj Jha. Gopal ji said he has left me confused. So I was keeping silent, and I had something to add. Yes, I do practice Pranayama. Yoga mein aata hai. Some simple steps of yogasana, and then for what I call, these are steps for my personal fitness. Physical भी है, mental well-being के लिए भी काम आता है. कभी साथ बैठ के करने का मौका मिला तो वो भी करेंगे. लेकिन yes, honestly speaking, lot of confusions are there, and this can be the starting point. कंफ्यूजन होना अच्छी बात है. इस कंफ्यूजन को दूर करने की प्रक्रिया में ही मेरा रास्ता निकलेगा. और एक चीज जो मैं शेयर करना चाहता था, रुक गया, देखा कि टाइम कॉन्स्टेंट है. वो ये जो आज तो हम लोगों के पास फंक्शनल MRI है, वो उस एरा में जबकि नहीं था, रांची में नहीं था. शायद अरुण जी जानते होंगे, देयर वाज अ प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन BIT मिश्रा, डॉक्टर अशोक मिश्र. उनका फैमिली ट्रेडिशन ऐसा था कि कुछ उनको ये जिसको हम लोग ज्योतिष, कुछ तंत्र, उनके फादर बड़े तांत्रिक थे,
बहुत उसके बारे में नहीं बात करके, कि उनकी एक स्टडी, एक स्टैंडर्ड हम लोग का जर्नल है, सरिता मैम जानती होंगी, ब्रेन, उसमें उनके साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट में, मुझे उनका नाम नहीं याद, उसके साथ उन्होंने कंबाइन करके एक किया था कि इफेक्ट ऑफ प्रेयर and chanting mantras on the recovery of comatose patients, and it was published in the standard journal. ब्रेन में कोई अगर आर्टिकल छपता है तो उसको हम लोग उस इरा में, मैं काफी दिनों पहले की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम बैक, उस समय शायद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, इंसिडेंटली उनसे मुलाकात हुई, कुछ बातें हुई, अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये पढ़ के देखिएगा कि एक मेरा निकला है। तो उस समय बात हो रही थी, अगर आई विश कि आज के एरा में कोई होता तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट, जैसे सरिता मैम ने कहा कि उसको हम एक नाम दे देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, क्वांटिमाइजेशन का एज है। लेकिन उसमें पाया गया था कि चैंटिंग ऑफ मंत्रास एंड प्रेयर्स सिटिंग बाय द साइड ऑफ कोमेटोज पेशेंट्स हेल्प इन देयर रिकवरी प्रोसेस। ये योग आध्यात्म और दर्शन से थोड़ा अलग साइंस की बात सरिता मैम कर रही थी, तो मैंने उसमें ऐड किया। रह गई बात आज के सेशन की, तो रियली वंडरफुल, आई वुड से इट्स एन इनिशिएशन फॉर दोज हु आर नॉट ऑलरेडी स्टार्टेड वॉकिंग ऑन दिस पाथ। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, कंफ्यूजन्स हैं, कहाँ से शुरू करें, कहाँ कैसे होगा, गुरु नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे। पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस वर आंसर्ड कि फिजिकल गुरु शरीर ना भी हो तो शरीरी भी हो सकता है। The thing is that all of us have to start somewhere, and today's session can be that starting point. Thank you very much Gopal ji, thank you very much. और जो मेरे अपने पर्सनल डाउट क्वेरीज हैं वो हम लोग कभी ग्रुप में या कभी इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे। Dipankar, you want to add something? Yes, it was a learning process. It was a learning process. आनंद आ गया, संक्षेप में तो यही कहूंगा। Dipankar? No, I don't have a question. I was sitting under one student in an algebra class. But I loved what he said. I would not claim I understood what you said. I think we have a big difference, and but it was so pleasant to hear from you. So the purpose was to get started, as Jai said. So I think we have solved the purpose. Let's start. Let's continue with this. Yeah, sure. Yeah. Gopal, can I just put it off because I do not know if Ashutosh is there. So can I just switch off? Will the recording remain intact? Yes, you can. Yeah. Okay, Rakesh. So we shall say bye for the session. We shall abandon it for today, not close it. The favorite line. Okay. Thank you very much. Yes. Thank you. Thank you. Thank you so much. Continue from here.